સુરતની પાંડેસરા પોલીસે 13 બોગસ તબીબોને ઝડપી પાડ્યાની સાથે 1500 જેટલા બોગસ ડોક્ટરોના સર્ટિફિકેટ પણ જપ્ત કર્યા. સુરતમાં થોડા સમય પહેલા નકલી હોસ્પિટલ ઝડપાયા બાદ તંત્ર સફાળું જાગ્યું હતું અને જિલ્લામાં ડિગ્રી વગર જ પ્રેક્ટિસ કરી લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા મુન્ના ભાઈઓને ઝડપી પાડવા તપાસ શરૂ કરી હતી. તે દરમિયાન સુરત પોલીસે પાંડેસરામાં ચાલતા 3 ક્લિનિક પર દરોડા પાડી બોગસ તબીબોને ઝડપી પાડ્યા હતા, જેઓ પાસેથી BMSના સર્ટિફિકેટ મળી આવ્યા હતા, જે સુરતના જ 2 તબીબોએ આપ્યાનું ખુલ્યું હતું. પોલીસે આ મામલે અત્યાર સુધીમાં કુલ 13ને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા આરોપીએ નફટાઈથી કહ્યું હતું કે આરોપો તો થયા કરે. સુરત પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં 100 જેટલી નકલી ડિગ્રીઓ મળી આવી છે. આરોપીઓ 70,000માં જ નકલી ડિગ્રી આપીને 10-12 પાસ બેરોજગારોને એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવા પ્રોત્સાહિત કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. નકલી પોર્ટલથી તબીબો સાથે છેતરપિંડી. આ ગેંગ દ્વારા BHMGujarat.com નામના પોર્ટલને આયુષ વિભાગનું અધિકૃત પોર્ટલ હોવાનું કહી લોકોને ફસાવાયા હતા. આ પોર્ટલ દ્વારા નકલી ડિગ્રી દ્વારા તેમને પ્રેક્ટિસ કરવાની મંજૂરી મળી હોવાનો દાવો કરવામાં આવતો હતો. આ ગેંગના સભ્યો દર નકલી ડિગ્રી માટે રૂપિયા 70,000 લેતા હતા. ડોક્ટર રશેશ ગુજરાતી અને ડોક્ટર BK રાવત આ ડિગ્રીની વ્યવસ્થા કરતા હતા, જ્યારે ઇરફાન અને શોબિત સિંહ તબીબો પાસેથી ઉઘરાણી કરતા હતા. ડેસર વિસ્તારના કૈલાશનગર ચોકડી પાસે આવેલા 3 ક્લિનિકમાં પોલીસે દરોડો પાડી બોગસ ડોક્ટરોનો પર્દાફાશ કર્યો છે. લોકોને એલોપેથિક દવા આપીને સારવાર કરનારા ડોક્ટરો સામે પોલીસ અને આરોગ્ય તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે. પાંડેસરા પોલીસ દ્વારા આ ગેંગના 13 સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ રાજ્યભરમાં નકલી ડિગ્રીના ગોટાળા સામે તંત્ર સક્રિય થયું છે. નકલી સર્ટિફિકેટથી પ્રેક્ટિસ. ઝડપાયેલા બોગસ ડોક્ટરો પાસેથી મળેલા BMS સર્ટિફિકેટ રાજ્ય સરકાર અથવા કોઈ અધિકૃત યુનિવર્સિટી દ્વારા માન્ય ન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ સર્ટિફિકેટ તેમને ડોક્ટર રશેશ ગુજરાત અને તેમના સાગરીતો દ્વારા આપવામાં આવતા હતા, જેઓ નકલી ડિગ્રીના ધંધામાં સામેલ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ સર્ટિફિકેટના આધારે તેઓ એલોપેથિક દવા આપી અને દર્દીઓનું આરોગ્ય જોખમમાં મૂકી પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખી હતી. પોલીસ દ્વારા કડક પૂછપરછ કરતા ઝડપાયેલા ડોક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ ડોક્ટર રશેશ ગુજરાતી અને તેની ગેંગે સર્ટિફિકેટ રિન્યૂ કરવા અને પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખવા માટે ધમકી આપીને પૈસા પડાવ્યા હતા. આ સર્ટિફિકેટ રિન્યૂ નહીં કરાવ્યા તો તે રદ થઈ જશે અને આરોગ્ય વિભાગની મુશ્કેલી આવે તો જમાવટ કરી દેવાની ધમકી આપી હતી. આ રીતે છલાયા લોકોને. પોલીસ સૂત્રો અનુસાર પાંડેસરા તુલસીધામ સોસાયટીમાં આવેલું કવિતા ક્લિનિક, ઈશ્વરનગરમાં શ્રેયાંસ ક્લિનિક અને કૈલાશ ચોકડી પાસે રણછોડનગરમાં પ્રિન્સ ક્લિનિકમાં દરોડા પાડી 3 ક્લિનિકના શશિકાંત મિશ્રી મહંતો, સિદ્ધાર્થ કલિપત દેવનાથ અને પાર્થ કલિપત દેવનાથ સહિત નકલી ડિગ્રી આપનાર ડોક્ટર રશેશ ગુજરાતી અને તેના સાગરીતો સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. આ જોગવાઈ હેઠળ આર્થિક અને માનસિક શોષણ ઉપરાંત આરોગ્ય સાથે ચેડા કરવા બદલ તમામ આરોપીઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. આ કેસમાં 1500 જેટલા ડેટાનું વેરિફિકેશન ચાલી રહ્યું છે, જેમાંથી 100 જેટલી નકલી ડિગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ડિગ્રીના આધારે એલોપેથિક પ્રેક્ટિસ કરવા માટે બોગસ ડોક્ટરોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા. આરોગ્ય વિભાગની ચેતવણી. આ ઘટના પ્રકાશમાં આવતા લોકોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. આરોગ્ય વિભાગે લોકોને સજાગ રહેવા અપીલ કરી છે કે ડિગ્રીના પુરાવા વગર કે બોગસ ડોક્ટરોની પ્રેક્ટિસ સામે સતર્ક રહેવું જરૂરી છે. જોકે આરોગ્ય અને કાયદો બંનેના હિત માટે આ મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી છે, જે આવનારા સમયમાં નકલી ડિગ્રી ધંધાને રોકવામાં મદદરૂપ થશે. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની સૌથી પહેલા ખબર આપતી સુરત એક્સપ્રેસ ન્યૂઝ ચેનલ, ડાયરેક્ટર રાજેશ મંગલેની સાથે. सूरत शहर में माननीय HM सर, DG सर और CP सर इनके निर्देशन से जो फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के या गलत डिग्री के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन मिला कि पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में 3 डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिला कि वो उनकी डिग्री फर्जी है और यहाँ पे वो एलोपैथिक दवाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आरोग्य विभाग की टीम के साथ में शशिकांत मिश्री महतो, ये एक प्रिंस क्लिनिक करके चलाता है, दूसरा सिद्धार्थ कालीपद देवनाथ और तीसरा डॉक्टर जो है वो पार्थ कालीपद देवनाथ. ये तीनों डॉक्टर हैं, ये पांडेसरा विस्तार में एलोपैथिक दवाओं के साथ में प्रैक्टिस करते थे. तो आरोग्य की टीम के साथ में इनके यहाँ पे पुलिस की टीम गई और जब इनकी डिग्रियों की मांगी गई इनसे डिग्री, तो इन तीनों ने BEMS की डिग्री, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस, इसका एक सर्टिफिकेट दिया और इसका फुल फॉर्म उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि ये सर BEMS जो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है. और बाद में जब आरोग्य की टीम ने बताया कि इस तरह की कोई डिग्री गुजरात सरकार के द्वारा अधिकृत कोई भी विभाग नहीं देता है,
ये डिग्री है वो बोगस है। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आपने ये सर्टिफिकेट है ये कहाँ से लिया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ रसेश गुजराती करके हैं डॉक्टर, और वो लंबे टाइम से ये जो है बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने इस तरह की डिग्री दी है। और उसके बाद में जब इन तीनों डॉक्टर से पूछपरछ करने के बाद में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो जो वहाँ से मिला वो एलोपैथिक दवाई है वो पंचनामा में रख के और कब्जे किया गया। उसके बाद में रसेश गुजराती को यहाँ पे जाके उससे पूछताछ की गई और सर्च की गई। तो वहाँ पे भी जब रसेश गुजराती के यहाँ पे उसके ऑफिस में गए तो बालाजी कृपा सोसाइटी पालनपुर जगात नाका रामदेव रोड पे रहता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स मिले, आई कार्ड के साथ में इस तरह के सर्टिफिकेट मिले 7, खाली सर्टिफिकेट जो प्रिंट करने के लिए थे वो 5 मिले, अलग अलग सर्टिफिकेट उनकी जीरोक्स 15 मिली और मेंबरशिप रिन्यूअल के फॉर्म 8 मिले। तो डॉक्टर से पूछताछ की गई कि आप ये BEMS का सर्टिफिकेट या डिग्री ये किस तरह से देते हो, किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हो। तो रसेश गुजराती ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो पहले यहाँ गुजरात में 90s में उसने DHMS का कोर्स किया और पहले 1-2 ट्रस्ट के साथ में लेक्चरर तरीके काम किया। होम्योपैथी में उसने लेक्चरर बना, फिर एक ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल बना, फिर प्रिंसिपल बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उसको पता लगा और रसेश गुजराती शार्प है तो उसने इसके बारे में स्टडी किया। तो उसको पता लगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसके बारे में किसी तरह का रूल है वो कोई पब्लिश नहीं किया हुआ है, कोई रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो बाहर है। तो इसने एक अहमदाबाद के डॉक्टर हैं BK रावत, उनके संपर्क में आया ये, फिर इन दोनों ने मिलके पहला जो इनिशियल कुछ लड़कों को 5-7 लड़कों को जिसका नाम इनको भी नहीं पता है, उनको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में बताया। 3 साल का कोर्स था, पर लगभग 2 साल में इन लोगों ने उनको ट्रेन किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई देना, क्या क्या रोग का उपचार हो सकता है वो सिखाया। जो 4-5 डॉक्टर को इन्होंने बना के मार्केट में भेजा तो उनका अनुभव ये आया कि कोई भी आदमी, पब्लिक के जो लोग हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा लेने के लिए कोई भी पेशेंट नहीं आता है, ट्रीटमेंट कोई करवाता नहीं है और दवा जो है उसका इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होता है। तो इस वजह से वो जो डॉक्टर मार्केट में जब गए तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। तो इन लोगों ने बाद में अपनी स्ट्रेटेजी 2002 के बाद में इन्होंने अपनी चेंज की और इन्होंने जितने भी लोग थे जो कोई किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता था, बाहर का व्यक्ति, उन लोगों से संपर्क करना चालू किया। इन्होंने उनको कि आप हमें 70,000 रुपये दीजिए, हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो गुजरात का है उसके अंडर में हमारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी गुजरात ये रजिस्टर्ड है और ये अहमदाबाद में है, इसके अंडर में हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे और उसकी डिग्री देंगे। ये ट्रेनिंग 2.5 साल की ट्रेनिंग देंगे, ये सब महज दिखावा था। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रेनिंग देने का, सूरत में भी नहीं है, अहमदाबाद में भी नहीं है। ये 70,000 रुपये किसी से 60, किसी से 70, मौका मिला तो 80 भी अलग अलग आदमियों से लेते थे। लेने के बाद में उनको 10 से 15 दिन में वो डिग्री प्रिंट करके ये लोग दे देते थे और साथ में रसेल जो है वो यहाँ पे उनको गारंटी देता था कि तुम लोग कहीं पे भी जाओ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद जो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। SMC, पुलिस, आरोग्य ये कोई भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डालेगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तो ये उनके बीच बीच में घूमता रहता था और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लोग प्रिंट करके देते थे कि ये हमारे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके बाद में आप अधिकृत हैं कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के। तो वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये लोग रखते थे कि जैसे 1 साल की वैलिडिटी का दिया तो उसके रिन्यूअल के बहाने से 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक ये पर डॉक्टर का 1 साल का वसूलते थे। और उस कोई डॉक्टर अगर ना बोले कि मैं ये नहीं दे सकता हूँ या कोई जांच पड़ताल करने की कोशिश करे तो उसको अलग अलग तरीके से ये लोग धमकाते थे। अभी एक डॉक्टर आया है जिसको तो इन्होंने कि तुम्हें मार देंगे इस तरह की धमकियां भी दी है। पर इनिशियल फेज में ये लोग प्रशासन का, आरोग्य विभाग का इस तरह का नाम लेके कि तुम्हें बुक करवा देंगे, इस तरह की धमकी देके ये अपनी एनुअल फीस वो कलेक्ट करते थे।